ना लेते हुए आशा साहनी आंटी जी का स्वागत करता हूं पूरे गुरु परिवार की तरफ से। और अमिताभ साथी अंकल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू, प्लीज सेशन को मैनेज करें। गुरु जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम और गुरु परिवार को मेरा प्यार भरा नमन। हम इस प्लेटफॉर्म पे गुरु जी को अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। एक छोटा सा राइट अप है जिसके माध्यम से उसमें गुरु जी किस प्रकार से संगत को अपने साथ करते हैं उसका थोड़ा वर्णन है। तो उसको आप सुनिए और कोशिश करें कि अपने जीवन में उसको उतार सकें, जिससे हम जो हैं गुरु जी के का सानिध्य प्राप्त कर सकें। तो पहले वो हिंदी में होगा, आशा साहनी आंटी वो करेंगी, और उसके बाद फिर अंग्रेजी में पढ़ा जाएगा जो कि सीमा कुमार आंटी जो हैं वो पढ़ेंगी। तो मैं आशा साहनी आंटी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आरंभ करें। जय गुरु जी। अंकल इंग्लिश का जो पाठन है वो सोनिया मेहता आंटी ने अभी ज्वाइन नहीं किया, वो करेंगी सोनिया मेहता आंटी। जय गुरु जी। अच्छा, तो करेक्शन अंग्रेजी का जो है सोनिया मेहता आंटी आज करेंगी। तो वो अगर ज्वाइन करेंगी तो उस समय देखें। बाय दैट टाइम आई होप शी विल ज्वाइन बाय देन। तो आशा साहनी आंटी, ओवर टू यू, प्लीज स्टार्ट। जय गुरु जी को मेरी नमस्ते, सारी प्यारी साथ संगत को मेरी नमस्ते। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी का, मल्टीलिंगुअल ग्रुप का, सुरेश अंकल का, जिन्होंने आज मुझे ये सेवा बख्शी है। हम वैसे किसी लायक नहीं है हम जीव कि हम गुरु जी की किसी भी महिमा को, गुरु जी की जीवनी को या गुरु जी के कहे वचनों को हम व्याख्यान कर सकें। बट फिर भी हमारी एक कोशिश छोटी सी कि हम गुरु जी की जीवनी, गुरु जी के जीवन में हुए घटनाओं को समझ सकें और उनको अपने जीवन में उतार सकें। इसी आशा के साथ गुरु जी से निवेदन करती हूँ, गुरु जी मेरे अंग संग सहाय रहना, मेरी जीवा पे निवास करिए, वास करिए, और वाणी जीवनी पढ़ते मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए, कोई शब्दों में हेरफेर हो जाए तो मुझे प्लीज माफ करिएगा, भूल चूक की माफी। जय गुरु जी। गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी। एक केवल विधाता ही अपने संतों के साथ आत्मीय एवं अंतरंग संबंध स्थापित करते हैं और उनके संत अपने आराध्य के साथ। यद्यपि लाखों गुरु जी से अवगत हैं, फिर भी हम उनके बारे में अत्यंत कम जानते हैं। वास्तव में व्यक्ति स्वरूप गुरुजी के बारे में तो हमारा ज्ञान शून्य से भी अधिक कुछ भी नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह उनकी अभिलाषा के अनुसार है। आध्यात्मिक कथाएं मात्र जिज्ञासुओं के लिए नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिकता केवल जिज्ञासा का प्रसंग नहीं है। वास्तव में यह एक अत्यंत गूढ़ विषय है जिसको समझने के लिए बहुत उद्यम और सतत परिश्रम की आवश्यकता है। गुरु जी के जीवन की जानकारी इतनी सीमित है कि उसे मात्र रूपरेखा ही कह सकते हैं। जो रूपरेखा हमारे समक्ष है उसे पूर्ण विश्वसनीयता के साथ सत्यापित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि समय के साथ याददाश्त पर विश्वास करना कठिन हो जाता है। प्रसंग कहानियां बन जाते हैं और कहानियां और लंबी लोक कथाएं। इस आधार पर जो हमें ज्ञात है वह वर्णित है। गुरुजी दिव्य ज्योत थे जिनका जन्म 7 जुलाई 1954 को पंजाब की मलेर कोटला तहसील के डुगरी गांव में हुआ था। पंजाब सदा से सिख गुरुओं का पुण्य स्थल रहा है। जैसे यीशु मसीह के जन्म पर 3 ज्ञानी पुरुष पहुंच गए थे, गुरुजी के जन्म पर सर्प दिखे थे। एक प्रमुख किंतु अद्भुत संयोग जो उनकी वास्तविकता से अवगत कराता है। वह शिव थे और हैं, जिनका चित्रण उनके नीले कंठ और हाथ में लिपटे हुए सांपों से दृष्टिगोचर होता है। यह भी सत्य है कि कुछ अनुयायियों ने उनका यह रूप देखा है। डुगरी कृषि ग्राम प्रधान ग्राम था और गुरुजी का बचपन भी उसी वातावरण में व्यतीत हुआ। उनके पिता बताते हैं
कि उनका छोटा पुत्र अक्सर खेती में सहायता करता था। जब भी ऐसा होता था, उनके खेत की पैदावार आसपास के खेतों से कई गुना अधिक होती थी। गुरुजी अक्सर निकट ही संत सेवादास जी के डेरे पर मिलते थे। उनके परिवार के सदस्यों की इच्छा के विपरीत जो चाहते थे कि गुरुजी अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान दें। उनकी इस आध्यात्मिक प्रवृत्ति को रोकने के लिए उनको कभी कमरे में बंद कर दिया जाता था। फिर भी गुरुजी डेरे पर संतों के साथ बैठे हुए मिलते थे, जहां पर बहुत बड़ी संख्या में अनुयायी आते थे। भविष्य दृष्टा संत लोगों को सजग करते थे कि गुरुजी को अकेला छोड़ दें, क्योंकि वह तीनों लोकों के स्वामी हैं। इन शब्दों की महत्ता कि गुरुजी त्रिलोकीनाथ हैं, उस समय भी या दशकों उपरांत, जब उनके भक्तों की संख्या बहुत बढ़ गई है, समझ में नहीं आई। किंतु देवत्व कभी छिपा नहीं रह सकता, क्योंकि कष्ट निवारण तो उसकी प्रवृत्ति है। उनके बचपन के एक दृष्टांत के अनुसार उनके एक सहपाठी का पेन परीक्षा से पूर्व टूट गया था। गुरुजी ने उसको अपना पेन दे दिया और जिससे उसने अपनी परीक्षा पूर्ण करी, और गुरुजी ने उस टूटे पेन से सफलतापूर्वक अपने उत्तर लिखे। यह उनकी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं थी। उनके अनुसार गुरुजी को परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न पहले से ही पता होते थे। उनके अध्यापक शिष्य की कक्षा से अचानक थोड़ी देर के लिए अंतर ध्यान हो जाने की घटनाओं से सदा विस्मित रहते थे। गुरुजी अपनी पिता की इच्छा पूर्ति के लिए पढ़ते रहे, और जो सामान्य अभिभावकों के समान चाहते थे कि उनका पुत्र एमए की उपाधि प्राप्त कर ले। गुरुजी ने अंग्रेजी में और इकोनॉमिक्स में 2 उपाधियां प्राप्त करी। कुछ समय के उपरांत गुरुजी ने इस संसार में अपनी आध्यात्मिक यात्रा के लिए घर छोड़ दिया। वह अक्सर अपने किसी परिचित के घर पर प्रकट हो जाते थे और कुछ दिन रहते थे, और फिर या तो चल पड़ते थे या कई दिनों के लिए लुप्त हो जाते थे। उनके माता पिता समझ गए कि उनका पुत्र कोई साधारण पुरुष नहीं है। उनकी माँ अन्य भक्तों की भांति उनको गुरुजी से संबोधित करती थी, और उन्हें सत्संगों में अक्सर गुरुजी के पैर छूते हुए देखा जा सकता था। यदि कोई भक्त निडर होकर उनका नाम पूछ भी लेता था, तो गुरुजी उसको एक छोटा किंतु अर्थसंगत उत्तर देते थे कि उन महापुरुषों के कोई नाम नहीं होते। इस कथन का अभिप्राय मात्र इतना होता था कि उनके व्यक्तित्व के समान स्वयं ब्रह्मा में ही समाहित हैं। दोनों एक ही हैं। नाम के लिए जिस भिन्नता की आवश्यकता होती है, उसका लोप हो चुका है। एक निजी मानव शरीर होते हुए भी वह व्यक्तित्व विहीन और अंतर्यामी थे। तत्पश्चात उस शरीर का उद्देश्य मानव को उसके दुखों और कष्टों से छुटकारा दिलाना हो गया। लोग बड़ी संख्या में गुरुजी के पास अपनी समस्याओं से मुक्त होने के लिए पहुंचने लगे। अधिकांशतः आर्थिक, गृहस्थी, व्यवसाय और व्यापार, कर्म जनित रोगों से संबंधित होती थी। शीघ्र ही उनकी प्रतिभा समूचे पंजाब में फैल गई और लोगों ने उनको ढूंढ निकाला। गुरुजी सदा कहते रहे कि असल चीज से कोई मंगता नहीं, वह तो दिव्यता की मूर्त रूप थे, और उनकी इच्छा थी कि लोग उनके पास प्रेम के लिए, केवल प्रेम के लिए आए। नम्रता पूर्वक समर्पित प्रेम से वह अकल्पनीय, असंभव वस्तुएं तक देने में सक्षम थे। गुरुजी तो दाता थे। उनकी ना कोई आशा थी और ना उन्होंने कभी किसी से कुछ ग्रहण किया। गुरुजी विभिन्न स्थानों पर रहे, जालंधर, चंडीगढ़, पंचकुला और नई दिल्ली, और सत्संगों की नदी पवित्र गंगा की भांति इन बंजर भौतिकवाद से तप्त प्रदेशों में बहने लगी। यही स्थान थे जहां पर लोग न केवल पूरे भारत से अपितु समस्त विश्व से उनके आशीर्वाद देने के लिए आने लगे। गुरुजी के सत्संगों में वितरित होने वाले चाय और लंगर प्रसाद उनके परम आशीर्वाद से संपन्न थे। उनके द्वार सभी के लिए खुले थे, चाहे वह उच्च या निम्न, अमीर या गरीब, पड़ोसी या विदेशी हो। स्वयं दिव्यता से परिपूर्ण, उनके लिए सब एक समान थे, और अपने भक्तों को भी ऐसा ही पालन करने को कहते थे। उन्होंने भक्तों को शंकाओं से उत्पन्न व्यर्थ के अंधविश्वास और निराधार परंपराओं को त्यागने को कहा। उनका कथन था कि सब ईश्वर से प्रेम करें, सब धर्म समान है और सबका मूल एक ही है। एक परमेश्वर है और मानवता का एकमात्र स्वरूप विश्व बंधुत्व का है। अतः इस तर्क पर जाति और मत के आधार पर कोई अंतर संभव नहीं है। ज्योतिष और अज्ञानता,
पर आधारित उपाय उनको अस्वीकार थे। वह अपने भक्तों को अपने कर्मों को समाप्त करने में सहायता करते थे, यह जानते हुए भी कि उनके शरीर को हानि भी होती है। वे अधिक बुरे कर्म अपने पर अंतरित कर लेते थे। उनके और उनके अनुयायियों के लिए संगत, उनके भक्तों की सभा सर्वोच्च थी। बदले में उनको अपने अनुयायियों से मात्र इतनी अभिलाषा थी कि वह अच्छा आचरण करें, किसी की भी निंदा ना करें, सबकी सहायता करें और किसी की भी हानि ना करें। यद्यपि वह पूर्व कर्मों की आंधी में से अपने भक्तों को निकाल कर उनको जीव और आत्मा का दर्शन कराते थे। वह उनको सदा सुकर्म और सदाचार करते हुए अध्यात्म मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देते थे। उनमें संपूर्ण समर्पण और अप्रतिबंधित आस्था अति आवश्यक थी। कल्याण कीता, गुरुजी कहते थे, और भक्त को सदा उनका आशीर्वाद प्राप्त होता था। एक बार उन्होंने समझाया कि उनका आशीर्वाद केवल इस जन्म के लिए नहीं है, आत्मबोध मोक्ष प्राप्ति तक है। गुरुजी ने कभी कोई प्रवचन नहीं किया, वह व्यवहारिक आध्यात्मिक के कर्ता थे। जैसे वह अक्सर कहा करते थे, उनके संदेश उन शब्दों के माध्यम से प्रसारित होते थे जो उनकी सभा में बैठे हुए भक्तों के हृदय को भाव विभोर कर देते थे। अतः अनुयायी गुरु शिष्य में स्थापित पवित्र संबंध बनने पर उनके संदेश सार्वजनिक या निजी रूप से ग्रहण कर लेते थे। यह पावन रिश्ता आपसी संबंध का मूल आधार था। वह भक्त का जीवन उस स्तर तक उठा देते थे जहां पर सुख, आपूर्ति और शांति सुगम होती है। शब्द मार्गदर्शक बन जाते थे जो ना केवल अनुयायी को उसका वास्तविक लक्ष्य बता देते थे, वह उसको उसकी वर्तमान स्थिति से भी अवगत करा देते थे। गुरु जी ने 31 मई 2007 को शिष्यों का प्रिय सदा गुलाब के पुष्पों सा सुगंधित शरीर त्याग दिया। एक प्रकार से यह एक शिक्षा ही थी। उनके अनुयायियों को बता दिया था कि जीवन कितना क्षणभंगुर है। जिस भांति वह चले गए, उन्होंने यह पाठ सबके मनस पटल पर स्थायी तौर से छोड़ दिया है। अति सुंदर बाग में स्थित, सबको मंत्र मुग्ध करने वाला पवित्र बड़ा मंदिर उनकी आध्यात्मिक धरोहर है। वह इतना अद्वितीय है कि उसे पृथ्वी पर स्वर्ग ही कहा जा सकता है, और इतना शक्तिशाली है कि आशीर्वाद के लिए मात्र उसके निकट से गुजरना ही पर्याप्त है। गुरु एवं शिष्य। गुरु कौन है और शिष्य कौन है? मांडुक्योपनिषद में वर्णित कथा से यह संबंध स्पष्ट हो जाता है। दो पक्षी जो अविभाज्य मित्र हैं, एक वृक्ष पर बैठे हैं। एक उस पेड़ के फल खाता है, किंतु दूसरा देखने में अत्यंत तेजस्वी बिना खाए देख रहा है। एक पक्षी पंख फड़फड़ाते हुए एक टहनी से दूसरे पर उछलते हुए, फलों से आकर्षित, उसकी सुगंध से मुग्ध अपनी चोंच हर जगह चला रहा है। खट्टे और मीठे दोनों प्रकार के फल खाते हुए चिड़िया को घृणा और लोभ दोनों अनुभव होते हैं, परंतु वह फल खाने में व्यस्त है। स्थिर पक्षी अपने स्थान से दूसरे को देखता रहता है। उसकी दृष्टि उतनी ही एकाग्र और लीन करने वाली है जितनी पहले की भूख। पक्षी जिस वृक्ष पर बैठे हुए हैं, वह जीव के अस्तित्व का वृक्ष है। पक्षी क्रमशः स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के द्योतक हैं। प्राणी अपने आप को अपने भौतिक शरीर से पहचानता है और सदा अपना मनोरंजन करता रहता है। सूक्ष्म शरीर ओजस्वी पक्षी मात्र दर्शक है। वह दूसरी चिड़िया के उत्तेजित कर्मों और उनसे उत्पन्न सुख और दुख को देख रहा है। जब वह पक्षी अपने मायावी अनुभवों से तृप्त हो जाता है, वह दूसरे पक्षी को देखता है, अपने सूक्ष्म रूप को। यही वह समय है जब अदृश्य गुरु और अनुयायी का संबंध स्थापित होता है। गुरु प्रत्येक शिष्य की अंतरात्मा है। गुरु तो वह दर्पण है जिसमें अपनी छाया को देखकर अनुयायी अपने आप को जान सकता है, परंतु इस ज्ञान अथवा अपने अंदर के गुरु के निकट आने से पूर्व शिष्य को अपने बाह्य प्रस्फुटन की अति आवश्यकता है, क्योंकि हम कई जन्मों से अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। आत्मज्ञान सरल नहीं है। हम इसके इतने आदी हो गए हैं कि हमें अपनी आंतरिक सत्यता से अवगत कराने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए
एक बाह्य माध्यम की आवश्यकता होती है। यही गुरु कृपा है। गुरु और उनकी कृपा में कोई अंतर नहीं है। कृपा गुरु का विशिष्ट लक्षण है और इसी प्रकार अपनी सब विशेषताएं, निष्कामता, निडरता, सर्वज्ञानी, सर्व विद्यमान, वास्तव में गुरु ईश्वर हैं जो आपके पास आए हैं। वह ही आपके निजी इष्ट, प्रिय मित्र, हृदय का सार, सर्वोच्च स्व की आंतरिक वास्तविकता है। आपके गुरु आपको ध्यान पूर्वक देखते हैं, इतनी दया दृष्टि से कि आप स्वतः ही उनको आदर देने को बाध्य हो जाते हैं। यह प्रेम का नियम है। इस अवस्था तक पहुंचने में भले ही कई जन्म लग जाएं, किंतु यहाँ गुरु को स्पष्ट देखने वाली तुरीय अवस्था तक पहुंचना निश्चित है। जब गुरु बाह्य वास्तविकता बनकर आते हैं, हमारे लिए उनको समर्पण करना सहज हो जाता है। हम भाव को कल्पना नहीं कह सकते, भले ही वह कितने प्रकाशमान हो। गुरु के वेश में साक्षात परमेश्वर हमारी देखभाल करने और संसार के मोह माया के बंधन से मुक्त कराने आते हैं। वह हमें हमारी सुषुप्तावस्था से जागृत करते हैं। वह निर्णय लेते हैं कि हम उनके साथ भक्ति भाव का संबंध बना सकते हैं। इस भक्ति के संबंध से हम शनै शनै फल खाने की क्रिया का त्याग कर देते हैं। हम आज्ञा पालन और अनुशासन करना सीखते हैं। हम धैर्य और दया का मूल्य जानने लगते हैं। हम में विश्वास और श्रद्धा भावों की उत्पत्ति होती है। अंततः हम गुरु को समर्पण कर पाते हैं और उनके माध्यम से हम स्वयं ब्रह्मा को आत्मसमर्पण करते हैं। हमारे जीवन में हो रहे हर कार्य में हमें गुरु और परमेश्वर की सहायता का आभास होने लगता है। हमारे अनुभवों में कोई अंकुश नहीं रहता। कई वस्तुएं और लोग हमसे बिछड़ जाते हैं। सब मनुष्यों की समानता हमारे संबंधों का आधार होता है। हम उस संसार में प्रवेश करते हैं जहां कामना का कोई स्थान नहीं है, संतुष्टि निरर्थक है और जहां जीवन में केवल गुरु की उपस्थिति सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ऐसी अगाध प्रेम ही भक्ति है। जीवन में प्रतिदिन की उथल पुथल और अन्य समस्याओं से निर्वाण के लिए गुरु पर पूरा विश्वास रहता है। हम उनको माता पिता सदृश मानते हैं। हमारे मित्र बनकर वह एकमात्र सांत्वना दाता है। हम उनसे ऐसे अनुराग करने लगते हैं मानो हमारे अलावा कोई और प्रेमी नहीं है। इस संबंध का एक ही प्रयोजन है, आत्मबोध। समुचित हल के अभाव में हम गुरुजी के पास पहुंचते हैं, कभी कभार इच्छाओं और उनकी और सन की कामनाओं के साथ। गुरुजी हमें उन सबसे उबार देते हैं। गुरु को मानव रूप में समझना सरल है। यदि गुरु का व्यक्तित्व है तो प्रेम अर्पित करना भी सहज है। उनकी भाषा और मौन को समझना आसान है, परंतु अस्तित्व की भाषा और मौन को समझना अति कठिन है। निश्चित रूप से, पर धीरे धीरे गुरु हमें तैयार करते हैं। यह अत्यंत मनमोहक यात्रा है। परमात्मा स्वयं गुरु का रूप धारण कर अवतरित होते हैं और आत्मा को स्वयं में ले जाते हैं। गुरु शिष्य संबंध दो व्यक्तियों का तब तक होता है जब तक व्यक्तित्व दो है। जब शिष्य गुरु के साथ पूरा तालमेल बिठा लेता है, तब यह अंतर विलीन हो जाता है। नदी में प्रवाहित होता जल और मटके में रखा हुआ जल दोनों समान होते हैं और तत्पश्चात भेद समाप्त हो जाता है जब मटके के पानी को नदी में फेंक देते हैं। जन्म जन्मांतर से फल भोगने से पक्षी अपने स्वभाव से अनजान हो जाता है। उसे यह तक नहीं पता रहता कि उसके पंख हैं। वह मुक्ति की उड़ान के बारे में सोचता भी नहीं है। वह सोचता है कि फल खाना ही सबसे महत्वपूर्ण है। उसका जन्म केवल फल भोगने के लिए ही हुआ है। गुरु की अनुकंपा से कभी कभी वह अपने उस मित्र को देख लेता है जो ना खाकर संतुष्ट है। तब वह सोचने लगता है। उसे अपने पंखों का ज्ञान होता है। मित्र की कृपा से जब उसे उस मित्र में ही अपने आत्मज्ञान की झलक मिलती है, वह उड़ने के बारे में सोचता है और अचानक ही एक दिन वह उड़ जाता है। यद्यपि पूरे क्रम को रूपकात्मक ढंग से चंद वाक्यों में कहा सुना जा सकता है। इस प्रक्रिया में कई जन्म लग सकते हैं। इसमें सबसे सुंदर गुरु की अद्भुत प्रतिबद्धता है, जिसमें वह समय समय पर भक्त को ऐसे बंधनों से बचाते हैं जिसमें उसका उलझ जाना प्रायः निश्चित है।
गुरु तब हस्तक्षेप करते हैं जब शिष्य कष्ट में पड़ जाता है, जब वह कर्मों की भंवर में फंस जाता है। गुरु अनुयायी को बचाने के लिए अपने सीमा रहित शक्ति व्यय कर देते हैं। ऐसे शिष्य गुरु का आभारी हो जाता है। एक प्रकार से गुरु उसकी आत्मा उसको वापस लौटाते हैं। यह तो श्रेष्ठ भेंट है, गुरु के अप्रतिबंधित प्रेम की पूरक है। अनुयायी फिर भी हट करता है, उसे गुड़गुड़ाने और बड़बड़ाने का कारण मिल जाता है। उसके लिए समझना कठिन हो जाता है कि गुरु उसके जीवन को क्यों इस प्रकार परिवर्तित कर रहे हैं। जैसे यह कम नहीं है, गुरु प्रत्येक शिष्य से विभिन्न व्यवहार करते हैं। वह सबको समदृष्टि से परखते अवश्य हैं, पर जब हमारे प्रशिक्षण और अभ्यास की बात उठती है, हमारे आत्मज्ञान की यात्रा, व्यक्तिगत मनोस्थिति और कर्म के भिन्न रूपों का आंकलन करना आवश्य हो जाता है। आपको शक्ति प्रदान करने वाला मिष्ठान मधुमेह के रोगी के लिए विष है। अकेले गुरु को यह ज्ञान है कि किसके लिए क्या उचित है। यह हमारा सौभाग्य ही है जो हमें गुरु तक लेकर जाता है, पर फिर हम गुरु की बात ना मानकर उनकी अवहेलना करते हैं। हम अपने आप को अवांछनीय और हास्यास्पद, अक्सर मूर्खतापूर्ण परिस्थिति में डाल देते हैं। हम एक सर्कस में रहकर अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, और जब गुरु आकर हमें निवृत्त करते हैं, हम वहीं पर रहना चाहते हैं। हमें अपने पिंजड़े पसंद हैं, हमें अपने संबंध स्थायी लगते हैं, उन पर ही हम कलेश करते हैं। अतः हम मात्र अपनी मुक्ति को स्थगित कर देते हैं। किंतु जब हमारे सांसारिक अनुभव वास्तविकता से परिचय कराते हैं, हमें अरुचि और भ्रम की उत्पत्ति होती है। हमारे अनुभवों का फल पक जाता है। तब तक हम माया की सूखी घास से अपना सिर उठाने लगते हैं और ढूंढने लगते हैं। यदि हम सच्चाई से गुरु जी के बताए पथ पर चलें, तो हम शीघ्र ही समझ जाते हैं कि हम इस पृथ्वी पर अपनी कामुक इंद्रियों की प्यास बुझाने या सांसारिक मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं आए हैं। गुरुजी इस संसार की निरर्थकता से परिचय कराते हैं। यह सब मोह माया का जाल है। फिर हम उसका लालच छोड़ देते हैं। हमें आभास होता है कि इसके पुरस्कार और दंड अर्थहीन है। यह तो उसको दिए जाते हैं जिसका अस्तित्व ही नहीं है। हमें ज्ञान होता है कि सुख दुख और सब घटनाक्रम समय के ज्वार भाटे के साथ आते जाते रहते हैं। शरीर की जन्म से मृत्यु तक की यात्रा में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे पकड़े रहना आवश्यक है। गुरु तो वह पक्षी है जो मुक्ति का गीत गाता है। वह हमें आभास दिला देते हैं कि इसी जीवन में हमें संकल्प करके यह यात्रा पूरी करनी है। उनको तत्परता और शीघ्रता से समर्पण करने में ही भलाई है। समर्पण ही हमारे पंख हैं। अज्ञानता हमारा अनदेखा मार्ग है। नम्रता हमारी शक्ति है। प्रेम हमारा लक्ष्य है। आत्मा की पूर्णता की आकांक्षा, जिसके कारण हम अनेक बंधनों से बच पाते हैं, अंतिम मुक्ति से ही सिद्ध होती है, और वह मोक्ष केवल गुरु चरणों में समर्पण से ही प्राप्त होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, ये सेवा बख्शने का शुक्राना। इन शब्दों को पढ़ने में मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो गुरु जी भूल चूक की माफी। सारी साथ संगत की माफी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। बहुत भाव से पढ़ा आपने आशा आंटी। ओवर टू यू सोनिया आंटी। Over to you, Sonia Aunty, for English reading. Jai Guruji. Jai Guruji Sangaji. Jai Guruji. This is Guruji ka Anantam Shukrana today for him to have given me this opportunity for reading, and thank you to Shukrana Guruji Maharaj, the multilingual Zoom platform, for this opportunity on a day when the celebrations for Shivratri have begun, and in such a beautiful way on this platform where we heard so many sangats, absolutely golden
Sangat, the whole day has been so wonderful. We heard about Shiv Mahima. Everybody expressed Shiv Mahima on Shivratri, pertaining to Shivratri. So today, to know a little bit more, I will read Guruji's biography of our dear revered Guruji, our Mahashiv, to try and understand this a little bit more. We can never say that we have understood, but just to know more of Guruji, I begin. And before I do that, Sangatji, please bear with me if there are any errors in reading. And I would like to also take Guruji's Agya before I start. Om Namah Shivaya, Shivji Sada Sahai. Om Namah Shivaya, Guruji Sada Sahai. I begin reading. Guruji, Guruji, Guruji. It is God alone who is intimate with his saints, and his saints alone who are intimate with him. Though lakhs know of Guruji, we still know too little. In fact, nothing at all about Guruji, the person. One cannot help but think that this is in accordance with his wishes. Spiritual biographies are not open to the merely curious, for spirituality is not the subject matter of curiosity. It is in fact a highly engaged pursuit. Guruji's biographical details are scant, and what devotees know of him is a mere outline. That outline we have cannot be given absolute historical credence, because as time passes, memories become untrustworthy and incidents become stories, and stories will no longer, and stories become longer tales. With these caveats, what we know follows. Guruji was the light divine, born on 7 July 1954 in Dugri village of Malerkotla Tehsil in the Punjab, a region sanctified by the Sikh gurus of yore. If Jesus' birth was attended to by the Magi, Guruji's was by serpents. A key happenstance which gives us the clue to his real identity. He was and is Lord Shiva, who is depicted and indeed has been seen by many devotees with snakes garlanded around his blue-throated neck and his hands. Dugri was a farming village, and Guruji's early life likely followed its patterns. His father recalls that his young son would often help him till the fields. When he did so, the yield would turn out to be many times more than other fields. Guruji would often be found at the nearby Dera, that's a settlement, of Sant Deva Dasji, often to the exasperation of his family who wanted him to study. Guruji would sometimes be locked inside a room to forestall such spiritual adventurism. Yet he would again be seen sitting with the sages at the Dera, which drew a large following. The sages who saw beyond the immediate would warn people to leave Guruji alone, telling them that he was the Lord of all the three lokas. The import of these words, that Guruji was the sovereign Lord, was not heeded even when, decades later, the number of his disciples had grown manifold. But divinity cannot remain hidden, because its nature is to give succor. A childhood instance that has come down is of a schoolmate's fountain pen getting damaged before an examination. Guruji gave his own pen with which he completed his papers, while Guruji, I read the sentence again, Guruji gave the boy his own pen with which he completed his papers, while Guruji wrote the exams successfully with the classmates' broken pen. That may not have been very surprising for his classmates, who cite that Guruji knew of all the questions that were to be set beforehand. His teachers, on the other hand, were perplexed by the student who would suddenly disappear from the classroom seat only to return momentarily. Guruji studied on to fulfill his father's wishes, who, like any normal parent,
wanted his son to get a master's degree. Guruji got 2 of them, in economics and political science. After some time, Guruji left home to fulfill his spiritual journey in this world. He would often appear in the house of one of his acquaintances, stay for a few days, and then move off or even disappear for days at a stretch. His parents realized that their son was no ordinary person. His mother called him Guruji, as did his devotees, and in satsangs would often be seen touching his feet. If a devotee would ever be so bold as to ask for his name, Guruji would give a short but meaning-filled reply. Mahapurushs have no name, he would say, implying to the discerning that the personality of such a one as him had already been engulfed by the divine. There was no name because there was no identifier left. The personal and human had become the impersonal, eminent in a body. What a beautiful sentence. Here, we must thank Jitu uncle for putting forth this biography in a very expressive and very well way of when he has explained spirituality as we go on to read further. Sangaji, I'll just read this sentence because it is important. There was no name because there was no identifier left. The personal and human had become the impersonal, eminent in a body. The purpose of that body then became to deliver humanity from its ills and sufferings. People thronged to Guruji for deliverance from problems, mostly material, of home and hearth, and jobs and businesses to diseases that had lashed onto them owing to karma. Soon the news of his power spread all across Punjab, and people sought him out. Never for the real thing, Guruji pointed out. He wanted people to come to him as embodiment of the divine for the sake of love and for love alone. That love given humbly. He could do 1,000,000 impossible things. Guruji was a giver. He never expected or took anything from anyone. That's true, Sangaji. Guruji used to always say, Asli cheez te koi mangda hi nahi. The real thing nobody asks. They are just looking for short-term gains and materialistic things. And here, but then there is it's a little contradictory in its own way because Guruji hid his divinity also from us. Mahapurush, he cloaked it. There were very few that could see through it. And he cloaked it, yet he wanted us to see that because Guruji was unconditional love, just love and love. He's merciful. God is merciful. So this is what Guruji always wanted. He said, Asli cheez te koi nahi mangta. Nobody asked for the real thing. And the real thing was to ask the Lord from the Lord. Rab kolo, Rab manglo. I continue reading. Guruji sat at various places, including Jalandhar, Chandigarh, Panchkula, and New Delhi. And a river of satsangs like the holy Ganges began flowing amid these arid lands, sun-baked in materialism. It was here that people from all over India and other parts of the world came to seek his blessings. The tea and langa prasad, blessed food, served at Guruji's satsangs were endowed with his special divine blessings. His doors were open to the high and low, rich and poor, to the neighbors as well as the foreigner. One with the divine himself, he observed no distinction and asked his devotees to bear none in mind. He wanted them to desist from mere outward ritual and superstition born of fear. He asked them to love God and told them that all religions were one and came from the same source, that there was one God and one universal brotherhood of humanity. Therefore, it stood to reason there could be no distinctions of caste and creed. He had no truck with astrology and ill-informed
shortcuts touted as remedies. Instead, he helped his devotees to ride out their karmas, always taking the worst of it upon himself, sacrificing his own body in the process. To him and for his disciples, the Sangat, the votaries of his congregation were supreme. Guruji used to say, कि मैं तोड़े अहम ते वहम nu mitan आया. He had come to annihilate our ego and superstitions and the rituals that we had got ourselves entangled in. And he used to say, कि I have come because people have forgotten God and are almost entering into God complex themselves, you know. And so he had come to take his fold back into being good people, to again develop humanity in people. He used to say, Banda banjo. Banda banjo would just be a good human being. And he used to say, कि तुसी, you know, gande bhande, you know, you come to me as dirty vessels. I clean you when you bow in front of me. And then you go out and do, you know, the same things that you're not supposed to be doing. You go and gossip and quibble. And so you again fill that up. And so I keep doing it till you slowly start transforming. So it really come to transform us into better human beings. In return, I continue reading. In return, he merely wanted his devotees to become good human beings, to criticize no one, to help everybody and harm none. He exhorted them to turn to the divine and to sow good seeds and behaviors, even as he navigated their life, their souls, over tempestuous waters of their past karma. What mattered most was complete surrender and the unconditional faith reposed in him. Kalyan Karta, Guruji would say, and blessings always, is what the devotee would get. He once explained that his blessings were not for this life alone, but extended to self-realization. I remember one thing, Sangatji, Guruji always used to say no ABC, which meant don't accuse, don't blame, and don't curse anyone, ever, because it comes back. You know, you are just making your own negative karmas. And he always said to help whoever we could, whenever we could, and always to do the right thing with the right attitude, and importantly, with the right intention. Guruji never delivered any sermons. He was a process, as he often announced, of practical spirituality. His teachings came via the Shabads that enraptured the hearts of those who sat around him. So his message was received by the devotee in ways that were public as well as intimate, owing to the sacred connection between Guru and the disciple. This connection was the very root of the relationship. It lifted the devotee's life to a level where joy, fulfillment, and peace came easy. The Shabads became a beacon that always showed his disciple his true aim, and they also became a map that told him where he was. Guruji left his form, beloved of devotees, smelling always of roses, on 31st May, 2007. It was in a way a lesson. He told his devotees time after time of how evanescent life was. With the manner of his passing, he impressed a lesson on our psyche. As a mark of his spiritual largesse, there stands Bade Mandir, the sacred temple set amid an enchanted garden, so beautiful that many can only exclaim that it is heaven on earth, and so powerful that they need only pass by it for a blessing. And that is true, Sangaji. It is truly heaven. You know, when you're there, especially on festivals, and when it is all lit up, spontaneously, I think every Sangat there would say,
every person. If there is heaven, this is it, and this is it. Guru and the disciple. Who is the guru and who is the disciple? A beautiful Upanishad allegory illustrates the relationships. Two birds, friends of each other, are perched on a tree. One eats the fruit of the tree, but the other, more resplendent in appearance, looks on without eating. One bird flits about on the tree, going from branch to branch, intrigued by the fruits, tempted by their smell, pecking everywhere. The fruits are both tart and sweet, and the bird experiences respectively aversion and avarice, but it is intent on eating the fruit. The other bird stays where it is and watches the first bird. Its gaze is as intent, as all consuming, as is the first bird's appetite. The tree on which the birds are perched is the tree of existence, and the two birds stand for the gross individual and the subtle self. The individual identifies itself with the body and goes about entertaining itself. The subtle self, the lustrous watching bird, is merely the witness. It looks on as the other bird is assailed by frenetic activity, and it results of pleasure and pain. When at last the individual is browbeaten by experience, when he has had enough, he looks up at the other bird, at his very own self. At this moment, the Latin guru and disciple relationship is made manifest. When a student is ready, the guru appears. It is often said, and it is true. And it is also true that when you start questioning, who am I? Your spiritual journey begins. When you question, what is all this? What is life? What is death? What is karma? Your spiritual journey begins, as has been said in Bhagavad Gita. The guru is the inner self of every disciple. He is the mirror in which the disciple can see and know himself. But before knowing or coming to the inner guru, the disciple needs an external manifestations of his own self. Since we have for a lifetime been eating the fruit of our activities, interiorization is difficult. We have been so accustomed to it that we need an external entity that can prompt and prod us to the inner reality. This is the grace of the guru. A guru and his grace are not different from each other. Grace is the characteristic of the guru, and so are all the other attributes of the self: desirelessness, fearlessness, omniscience, omnipresence. In fact, Guru is God who has come for you. He is your very own personal Isht, your beloved friend, the heart of your heart, the inner reality of your supreme self. Your Guru watches you so intently with such exuberance of grace that you're bound to look up at him. This is the law of love. It may take lifetimes for you to look up, but look up to the crystal clear face of the Guru, you will. When the Guru presents to us as an external reality, it becomes easier for us to devote ourselves to him. We cannot offer our emotions to abstractions, no matter how luminous. In the form of a guru, God himself comes to take care of us and takes us out of the cycle of samsara. He wakes us up. He decides that we can form a relationship of devotion with him. Using this relationship of devotion, we slowly wean ourselves away from fruit eating. We learn obedience and discipline. We learn patience and compassion. We find trust and faith. Finally, we are able to surrender to the Guru and through him to existence itself.
We begin seeing the hand of Guruji or God in our life events. Our experiences lose their sting. We break away from many things and many people. We reform relationship on the basis of the equivalence of human beings. We enter into a world where desire has no meaning, gratification has little hold, and where only the Guru's participation in our life gives us any meaning. Such complete loving is devotion. We trust the Guru with the minutiae of everyday life and great crisis of life-turning events. We turn to him as a father and mother. We befriend him as the sole comforter. We fall passionately in love with him as the only lover. The great crucible of this relationship has only one purpose: self-realization. We genuinely go to our Guruji with many problems and difficulties, and at times with wishes and whimsies. Guruji takes us out of all of them. It is easy for us to comprehend a Guru as a person. It is easy for us to offer our love to him once the Guru has a personality. It is easy for us to understand his words and his silences, because it is rather difficult to listen to and understand the language and silence of existence, which is true. That is why we find Sangaji meditation very difficult. But Guruji has made it all very easy for us by saying to just do mantra jap. And he even told, I think it's written in the book, Such Charged with Divine Love by Sahni Aunty. I think in a dream he did, or verbally told her how to go about sitting and how to remain still. And that is something very difficult, to be still and in silence, and how slowly to increase the minutes that you can sit. I continue. Surely but slowly, the Guru molds us. It is an enthralling journey. The Paramatma himself comes down as our Guru to lead his Atma to himself. Sangaji, we are sparks of light, and he is our Guru, our revered Guru. Mahashiv is the divine light. The Guru-disciple relationship is of two people only insofar as these two personalities exist. When the disciple is in complete attunement with the Guru, there is no distinction between them. There is no difference between the water flowing in a river and the water kept in a vessel. And later, there is no hope of making a distinction when the water kept in the vessel is thrown into the river. However, lifetimes of fruit picking make the bird a stranger to its own nature. It does not even know it has wings. It does not even think of the flight of freedom. It thinks that fruit eating is all there is to it. It is born to eat fruit. By the Guru's grace, it sometimes looks at its friend who is content not eating. Then it wonders. And then it comes to know. I'm sorry, I think I skipped a sentence. I'll just read this again. It does not even think of the flight of freedom. It thinks that fruit eating is all there is to eat. It is born to eat fruit. By the Guru's grace, it sometimes looks at its friend who is content not eating. Then it wonders. And then it comes to know it has wings. And through the grace of its friend, in whom it catches a glimpse of its true being, it contemplates flight. And suddenly one day, it flies away. Though the entire process can be allegorically represented in a few sentences, the process can take lifetimes. The wonderful thing is the amazing commitment of the Guru to rescue the disciple time after time from the many entanglements the disciple is sure to insere himself in. The Guru intervenes when the disciple gets himself into trouble. He comes to his rescue when the disciple is stuck inside karma's noose. The Guru sacrifices his own illimitable wealth of Shakti
to save his disciple. The disciple is thus totally obligated to the Guru. It is the Guru who, as it were, hands back the disciple's soul to him. It is the ultimate gift, the fulfillment of the Guru's unconditional love. And yet the disciple is disobedient. The disciple finds reason to mutter and grumble at the Guru's shepherding. He or she is unable to understand why the Guru shapes his life the way he does. To confound their already perplexed brains further, the Guru treats each disciple differently. That is, he looks upon all with the eye of same-mindedness. But when it comes to our training and instruction, our journey to self-realization, individual temperaments, and different arcs of karma on which we travel have to be taken into account. The sweet that gives you strength is poison for a diabetic. Only the Guru knows what is apt for whom. It is great good fortune that leads us to a Guru. But when we resist the Guru by not following him, we place ourselves in an unenviable and ridiculous position. We are living in and enacting a circus, and when the master finally comes to relieve us, we want to stay back. We like our cages. We think our relationships are permanent. We agonize over them, and so we merely defer our liberation. But our experience of the world shows us for what it truly is when we grow distasteful and disillusioned, when the fruit of our experience ripens. Then we lift our heads up and say, and the hay, up from the hay and search. If we truly follow a Guru's path, we quickly learn that we have not come upon earth to sate our thirst for sensual pleasures or satiate our ambition. The Guru shows us the futility of the world. It is unreal. And then we don't hanker for it. We find that its reward and its punishments are meaningless, that they are given to an individual that does not exist. We find that pleasure and pain and all the fears of men flow with the ebb and tide of men. We find that our bodies go from birth to death and are nothing to cling on to. The Guru is the bird that sings the song of freedom. He makes us realize that it is in this very lifetime that we have to commit to and consummate our journey. We need to devote ourselves to him readily and speedily. Devotion is our wings. Innocence is our unseen path. Humility is our strength. Love is our goal. The soul's aspirations to fulfill itself, which causes us to flit about in many engagements, is only realized when we fly to ultimate freedom. And that liberation is found by the disciple in surrendering himself to the Guru's feet. Sangaji, this is exactly what we used to say, that's our test. And that is what surrender is in any given situation. To be equanimity and equipoise, to exhibit those traits in any given situation, and not let that shake us, and yet have faith and follow the path laid by our Guruji is what will take us to our ultimate goal, our liberation by the grace of Guruji. Thank you, Sangaji. Jai Guruji. And thank you, Suresh Uncle and the platform for giving me this opportunity. And on this very, very special day. Jai Guruji. Jai Guruji. What do you Amtab Shatri Uncle? Shukrana Guruji. Thank you, Sonia Aunty. Thank you very much for a beautiful reading. Only one correction I would like to incorporate here, which is an error in writing this.
That is that Guruji did his 2 post-graduations in English and economics, not in economics and Oh, politics. okay. It's not political science. I see. Okay. Jitu committed a mistake in that. All right. Okay. But that time it had already come out, so he could I not see. do that. So he did his I made a post-graduation. note, Uncle. Thank you so much. Note that. It's the English and economics. Right. Yes, sir. And it's a beautiful reading, and we must know how we can connect to Guruji and how we can move on to the ultimate path. Lakshya जिसे कहते हैं हिंदी में. जी. The mission is there, the aim is there, but we don't know the path, and unless we get his kripa, we cannot move on that. So we need to pray to him that Guruji कृपा कीजिए. अपनी शिव पुराण में it comes that कृपा से मेरी भक्ति प्राप्त होती है. That's what Lord Shiv tells Parvati, and we must remember that always. It is not on our own कि we may continue thinking and living in a false world and illusion that we are having a bhakti for Shiv, and we may not really be having, because we are disturbed by when Guruji tests us by giving us some hard tests. Because the difference is that examination, you know the examination schedule in the schools and colleges. But life, when the tests come, you don't know the schedule at all. And especially if Guruji is making you go through that to test how much is Sangat has gathered and how much they are ready for the next stage. Thank you. Thank you, Sonia Aunty. That's so true. And thank you, Asha, Sahni Aunty. Both of you, thanks a lot for the reading today. And now I hand over to Suresh Uncle for the remaining program. जय गुरु जी. थैंक्स अ लॉट अमिताभ शास्त्री अंकल. आशा सानी आंटी, बहुत भाव से, बहुत सुंदर तरीके से आपने गुरु नमन किया है शिवरात्रि महोत्सव के पूर्व संध्या पर. शुक्राना गुरुजी महाराज का, शुक्राना मल्टीलिंगुअल ग्रुप का. वरना हम कुछ नहीं है अंकल, सब करवाने वाले गुरुजी हैं, बुलवाने वाले गुरुजी हैं. गुरुजी सेवा बख्शते हैं तो पूरी भी वही करवाते हैं. और एक चीज मैं बोलना चाहूंगी अंकल, सुबह भी मेरे मन में ये भाव बहुत आ रहा था. आज सुबह का जो महाशिवरात्रि महोत्सव था, मतलब उस महोत्सव में ज्वाइन करके सच में ऐसा लग रहा था कि जैसे हम किसी सब्जेक्ट का इंसाइक्लोपीडिया देखते हैं, कि उसमें हमें उसकी इतनी मतलब विशाल जानकारी, तो इतनी सारी संगत से गुरुजी के बारे में अलग अलग तरह से सुन के ऐसे लग रहा था कि कोई एक बुक ना पढ़ के, उसके बारे में ना पढ़ के, उनकी पूरी हमें उसके बारे में जानने के लिए अलग अलग मिल रही थी. हर संगत से अलग अलग उनके संगत, उनके सत्संग, उनके चमत्कार, गुरुजी के एक्सपीरियंस सब सुन के बहुत बहुत आनंद आया. उसके लिए आपका शुक्राना अंकल, बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि इसमें सारा एफर्ट आपका था. शुक्राना गुरुजी महाराज दा ओनली. वो तो है ही अंकल, वो तो है ही करवाने वाले, लेकिन उन्होंने आपको इतना अच्छा माध्यम बनाया है कि आपके द्वारा ही इतनी सारी संगतों की सारे एक्सपीरियंस, सारी संगत हम तक पहुंच रही है. वरना हम कहाँ किसे जानते हैं, और किसी को भी नहीं जानते थे. लेकिन इस ग्रुप ने, इस परिवार ने इतना अच्छा ये प्लेटफॉर्म हमें दिया है कि हम इससे इतना प्यारा गुरु परिवार हमें मिला है. इसके लिए गुरु जी का और मल्टीलिंगुअल ग्रुप का बहुत बहुत शुक्राना. जय गुरु जी. थैंक यू. Sonia Aunty, the recitation of Prostration Guruji was blissful and divine. Thanks a lot. Over to you. Shukrana Guruji ka uncle and aapka for Jai giving me Guruji. this seva. Jai Guruji. Thanks a lot, Amitabh Shastri uncle and all Guru Parivar. Thank you, Sonia Aunty. Over to you, Angel Aunty. Thank you, uncle. I'll just take this opportunity to wish everyone a very happy Shivratri. Jai Guruji. Ji. Jai Guruji. Thank you. Over to you, Angel Aunty. Jai Guruji. Shukrana Guruji.